Hi friends, in this video I am going to explain how to communicate PLC to PLC. So let's start the video. In this PPT you can see PLC to PLC communication के लिए two types method होते हैं. First simple CPU communications and second this with relative network modules like CC, link, fields or TSNs. In simple CPU communication directly of PLCs and IP एड्रेस डिफाइन करके डायरेक्ट कर सकते हैं एंड विथ रिलेटिव नेटवर्क मॉड्यूल्स में आप एक नेटवर्क को मास्टर्स एंड सेकेंड को आप एज ए स्लेव डिफाइन करके एंड सेम डिफरेंट सेटिंग मैपिंग करके आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो लेट्स आपको सेटिंग्स कैसे करनी है वो आपको एक्सप्लेन. हमारे पास GX63 एंड दिस इज R08 CPU एंड अब आप फर्स्ट मैं डिफाइन करता हूँ सिंपल CPU कम्युनिकेशंस कैसे करें. So for simple CPU communication, simply click R08 CPU and existing configured CPU and go to modules parameters. And यहाँ पर आपको simple CPU communication settings simply click use and simply click simple communication settings. In this window you need to define your CPU and related CPU name and parameters address like communication patterns, read, rewrite. क्या करना है अब लाइक आपको रीड करना है रीड्स एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूशन लाइक इंटरवल्स लाइक samplings between the this is fixed means depends on this traveling interval times and source आपको डाटा को रीड करना है and this is like device types तो मैं आपको लाइक आप मेल सीरीज सब कोई भी लाइक जो भी आपके पास सपोर्ट पीएलसी है एंड उसके बिल्ट इन पोर्ट्स लिए यहाँ पर आपको डिफाइन करा बिल्ट इन इथरनेट्स लाइक मुझे यहाँ पर एफएक्स मुझे 8 से करनी है तो 8 से, अगर आपको एफ से करना है आप एफ से कर दीजिए एंड सिम नेटवर्क का आईपी एड्रेस लाइक 192.168.3.10 सिंपली आपको क्लिक करना है ओके एंड बिट टाइप्स आपको बिट रीड करना है एंड या जो भी डाटा आपको रीड करना है या अगर आपको बिट करना है आप बिट फैन करिए एंड स्टार्ट्स कितना करना है लाइक 632 एंड डेस्टिनेशंस आपका सोर्स मीन्स आप पीएलसी साइड आएगा एंड डेस्टिनेशन आपको कितना लाइक 32 एंड अब आप कहता है वर्ड में आपको कितना चाहिए लाइक डी रजिस्टर लाइक यहाँ पर मैंने एंड यहाँ पर भी अगर आपको 32 चाहिए तो आप 32 डिफाइन कर दीजिए एंड डेस्टिनेशन पर भी आप सेम एंड सो आपका कंपटीशन आपका कम्युनिकेशंस कंप्लीट हुआ. सिंपली आप यहाँ पर इसको चेक कर दीजिए रिजनल रेट्स एंड सिंपली अप्लाई सेम सेटिंग्स आपको अनदर सीपीयू में भी करना पड़ेगा बट वहाँ पर आपको यहाँ पर राइट का शो करना पड़ेगा एंड इसमें आपको रेट इससे आप राइट करने के लिए भी यहाँ पर राइट आपको एड्रेस आपको सेम करना है तो सेम नहीं करना है देन यहाँ पर आप आसान कर सकते हैं आपको किस पीएलसी इसमें आपको राइट करना है
आगे आपको सेव करना है सेम्स एंड यहाँ पर रिलेटिव आप आईपी एड्रेस एंड सिंपली क्लिक्स एंड आपको कितने बिट आपको राइट करना है एंड रीड करना है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सेम सेटिंग्स आप डाटा रजिस्टर्स के लिए एंड उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको 0 एंड से एंटर करेंगे। देयर इज नो एरर्स मींस आपका सिंपल टू सिंपल डन हो चुका है। द नेक्स्ट स्टेप अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में लाइक नेटवर्क बेस्ड। सो यहाँ पर अभी हमारे पास मॉड्यूल इंफॉर्मेशन मैंने एक प्राइस है लिंक आई फील्ड नेटवर्क कार्ड ऐड है एंड अब मैं इसके थ्रू कैसे हमें ऐड करना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज ए मास्टर स्टेशन डिफाइन करना एंड here you put any station numbers. So go to basic settings and then network configuration settings. Click detail settings and here you need to add any remote stations modules. Just wait. Okay, अभी मैं हमारे यहाँ पर दो ऐसे रिमोट कार्ड ऐड एंड मैं एज ए लोकल मॉड्यूल ऐड करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट साइड में टॉप एंड सेटिंग आई फील्ड मास्टर एंड लोकल मॉड्यूल्स शो है। सिंपली आप इस पर क्लिक करना एंड करते here you can see your network related card like अभी हमारे पास सेम है आरजे प्रीटी वन मेरे पास मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। ओके अब मैं इसको सिंपली लिंक एंड चेक systems procedures and simply close with reflective settings and just 1 minute। ओके अभी हमारे पास यहाँ पर एक इसका एड्रेस शो हो रहा है लाइक 70 से 80 ऑफ 7080 ऑफ तो हमने 7080 ऑफ के बीच में डाटा रजिस्टर्स में होगा लाइक REX ROI 7080 ऑफ and 7080 ऑफ। सेम यहाँ पर भी आप डिफाइन करते हैं आपको किस नंबर ऑफ डाटा रजिस्टर पर आपको चेक करना है लाइक मैं इसको डिफाइन करके 1000 एंड सेम कमांड देते हैं। अब इसको आप चेक कर देंगे लाइक देयर इज नो एरर्स and simply applies and now you can check your detail settings window and now here you can see like your starting address A1000 and वो हमें डाटा रजिस्टर में मैप करना है तो उसके लिए हमारे पास है 54 तो ये अब आप इसको एज ए बढ़ा भी सकते हैं बट अभी हमारे इसका 5463 उसके लिए हमारे पास डिटेल सेटिंग्स रीड्स ओके एंड 53 just wait।
check the reminders and just 1 minute and okay, 114 like first 12 points. There is 16 points, so I need to define 16 points. 1 minute. 54263 of इसको हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं slices 6 and 6 attributes and there is overlappings. Check noise and apply and check network configuration settings. Now अब हमारे पास दो both settings complete हो चुके हैं like CPU to see and here you can see starting address read 104 and write 154 and this is our input address means read and this is our write address. तो same settings आपको remote and another CPUs के साथ में भी connected मॉडल में करना लाइक हमने यहाँ पे इसको आज मास्टर डिफाइन किया एंड वहाँ पर आपको इसको एज ए लो पे डिफाइन करना पड़ेगा एंड स्टेशन नंबर सेम रखना पड़ेगा एंड आपको ये सेम सेटिंग्स लाइक 708F एंड सेम सेटिंग्स आप सेम पैरामीटर्स में डालना पड़ेगा एंड सेम रिफ्रेश सेटिंग्स भी आपको सेम PLCs रिलेटेड एंड डिवाइस में भी डालना पड़ेगा जिसके थ्रू आप PLC टू PLC कम्युनिकेशंस स्टैब्लिश हो सकते हैं. थैंक यू.